Hey guys, welcome back to SMC International. आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं RTX 4070. Previously I've used the 3080 gaming extra variant, so it is very similar to that. इसमें ये भी है कि 16 पिन का न्यू कनेक्टर आता है, which NVIDIA has made a kind of a standard अभी flagship cards पे. और रिकमेंडेड PSU 650 वाट है. CUDA कोर्स की हम बात करें तो 5888 CUDA कोर्स है इसमें. 4070 के हिसाब से क्लॉक्स आर रियली वेल इन 4000 सीरीज. दिस कैन डू 1440p गेमिंग. कमिंग ओवर टू द अनबॉक्सिंग अब बात करें तो इसमें एक सपोर्ट के लिए मिल जाता है. दैट इज फॉर लाइक कि GPU sag ना हो. Support bracket basically, and this is the GPU. As you can see, this is wrapped. It's a triple fan cooler and it's pretty thick according to the 4070 क्योंकि ये ज़्यादा overheat करता नहीं है. Still this cooler is kind of a overkill and तुम थोड़े बहुत clocks expect कर सकते हो, like you can overclock this card. So as you can see, this is a 3-fan cooler with MSI's patented fans, which are the Frozer 4.2i, and that's the 16-pin plug. MSI का लोगो lit होता है. This glows in RGB and the backplate is all blacked out. Still तो के बड़ा इस कार्ड का. So these are the fans and the memory is 12GB of GDDR6X clocked. The memory bus is 192-bit. और मेमोरी स्पीड से 21 Gbps. जो क्लॉक स्पीड से इस कार्ड की है, यू कैन बूस्ट इट अप टू 2.61 GHz. And the third fan which comes with this PCB, because the PCB is smaller, the third fan is like a flow through design, so that helps keep the heat pipes cooler. But ज़्यादा काम नहीं आता है थर्ड फैन, बट mesh केस नहीं है, तो this helps in keeping the heat pipes cool ताकि heat transfer थोड़ा जल्दी हो पाए. परफॉर्मेंस की बात करें तो 4070 परफॉर्म्स रियली क्लोज टू द RTX 3080. 5% अंडर के मार्जिन में दिस परफॉर्म्स रियली क्लोज. Sometimes the RTX 3080 is faster, sometimes the 4070. So the specs, considering the budget, this is like a similar price card क्योंकि RTX 3080 भी इंडिया में 61,000 का लॉन्च हुआ था, but it wasn't actually 61,000. So तुम्हें practically same performance मिल रही है as compared to the 3080. इसमें ज़्यादा VRAM है क्योंकि वो 10GB है. This card is specifically made for 1080p and 1440p. अगर तुम 4K में गेमिंग करना चाह रहे हो तो this is not a 80 class GPU. This is RTX 4070. तो अगर 4K पे we look at the test, this is slower as compared to the 3080 which is the previous generation. 5% से लेके around 18% तक भी बहुत गेम्स में slower है. So if you turn on ray tracing, so that's different because it has new generation of cores and tensor cores. मतलब ray tracing cores are latest gen and DLSS 3.5 भी support करता है, which RTX 3080 did not. So that is a plus point when you go with the 4070. अगर तुम नया build कर रहे हो और अगर तुम्हें चाहिए कि like new games खेलना है with DLSS 3 support, but that is not a major like a factor of buying a GPU, but it is a bonus point. प्रोडक्टिविटी में इस GPU की बात करें तो RTX 4070 से ज़्यादा 7800 XT परफॉर्म करता है. एंड इवन तो NVIDIA का लेटेस्ट जनरेशन है, AMD का 6800 XT भी प्रोडक्टिविटी में मोस्टली performs better than the RTX 4070, obviously because it has 16 GB of VRAM and is a more powerful class of GPU. But considering the NVIDIA benefits which you get, NVIDIA broadcasts and AI features, also ray tracing, DLSS, so that can be compared. But for specifically productivity, it is a little slower than the RTX 3080 and 6800 XT and 7800 XT in comparison. परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी का रेशियो की बात करें तो इट इज़ वेरी एफिशिएंट. ड्रॉज अराउंड 180 to 230 वॉट्स इन लाइक मैक्स लोड्स. हम बात करें RTX 3080 की, वो ड्रॉ करता है अराउंड 280 to even 350 वॉट्स का पीक पावर ड्रॉ. बात करें 6800 XT एंड 3080 की तो वो ड्रॉ करता है अराउंड 280 to 350 वॉट्स डिपेंडिंग ऑन व्हाट मॉडल यू हैव. So efficiency gains are really good with the ADA Lovelace architecture. It's based on 4nm process. So maximum में 235 watts draw कर रहा था अपनी testing में. That was like a peak touch point. Usually it was around 185 to 200 watts, which is whole 100 watts lower. That was it for the video, guys. अगर तुम्हें ऐसे ही custom PCs चाहिए, अगर तुम्हें accessories customize करानी है, so you can contact us on our sales team which will be displayed right now on the screen. एंड ऑल्सो तुम वेबसाइट पे जाके अपने कस्टम कोड्स बना सकते हो या अपनी प्री कॉन्फ़िगर्ड PCs ले सकते हो विच आर फॉर AI, वीडियो एडिटिंग, ML
और 3D VFX, we have all the series. Also budget gamers के लिए हमारे पास है integrated GPU की series which is based on the Ryzen chips. And www.smc international पे आप visit कर सकते हो और just call on our sales team to get your customized PC build. अगर आपको इतना PC का knowledge नहीं है and if you still want a PC build, our customer care sales executive will help you build a PC. That was it for the video guys. Thanks for watching in.